हाय गाइस, आई एम डॉक्टर रजत। कल हमने किया था ऑल ऑन 6 इम्प्लांट की सर्जरी। आज हम कर रहे हैं एंटीरियर इम्प्लांट की सर्जरी और मेरे साथ इस समय है डॉक्टर दर्पण जो ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन है। इन्होंने अभी इम्प्लांट का कोर्स शुरू किया है। शी वांट्स टू गेन मोर एक्सपीरियंस विद इम्प्लांट्स एंड now I just would like to know more from her. Yes, Dr. Darpan, this is your first day. As a maxillofacial surgeon, what all surgeries have you done so far? So as a maxillofacial surgeon, I've covered pretty much the entire spectrum of maxillofacial surgery. I've covered trauma, I've covered orthognathic, I've covered cleft lip and palate, I've covered pathologies, I've covered oral surgery, I've covered extractions, impactions. Implant was definitely a weak area, and that's why I'm here. Okay, so what are your future goals when it comes to surgical pattern and implants? How this course is going to be helping you? Well, for one, clear my fundamentals as far as implantology is concerned, and then obviously going into advanced implantology. Okay, full mouth implants, fast track implants. Fast track, immediate implants, immediate loading, all on 4, all on 6, all on 8, sinus lift surgeries. So that's what I'm hoping to cover. Okay, we'll try and since I know the surgical exposure is good, but we'll try to work on the prosthetic part. So आज का जो केस है उसमें अब एंटीरियर का केस है, तो एंटीरियर के केसेस में मैंने हमेशा बोला है अगर आप सिंगल इम्प्लांट प्लेस कर रहे हैं तो आपको ट्रांजिशन लाइंस देखनी है, लिप मूवमेंट्स देखने हैं, लिप कॉन्टोर्स देखने हैं, और लिप लाइंस के साथ साथ आपको देखना है रेस्टोरेटिव स्पेस कितना है। जब आप प्रोस्थेटिकली की बात करेंगे आपको पता होना चाहिए बहुत सारे अबटमेंट्स के वेरिएशंस हैं, चाहे वो डायनामिक अबटमेंट्स हैं, चाहे जिरकोनिया अबटमेंट्स हैं। अब बात की जाए डायनामिक अबटमेंट्स के बहुत सारी डेंटिन शेड्स में आती हैं, आप जिरकोनिया कोपिंग दे सकते हैं, बड़े शानदार रिजल्ट्स होते हैं जिरकोनिया अबटमेंट्स में भी, क्योंकि बहुत डेंटिन शेड्स में आती हैं। अब उसके अलावा पेरियो पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। पेरियो पार्ट की बात अगर करेंगे तो देखना पड़ेगा कि थिकनेस कितना है टिश्यू का। आप फ्री जिंजाइवल ग्राफ्टिंग भी कर सकते हैं। एक सुंदर सा प्रोफाइल यंग पेशेंट है, 45 ईयर्स का है, कि है डेंचर पहन रहे हैं, 18 साल के थे जब। तो सिंगल इम्प्लांट के केसेस को आपको बहुत प्लानिंग से लेके चलना पड़ता है, चाहे वो प्रोस्थेटिक प्लानिंग हो, चाहे वो सर्जिकल प्लानिंग हो, इम्प्लांट को एंगेज करना हो नेसल फ्लोर से। तो पूरा का पूरा जो वर्क फ्लो है इट शुड बी डन इन अ प्रॉपर मैनर, और तभी आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। एंड आई जस्ट लुक फॉरवर्ड टू give you an exposure where you do lot many cases, and the focus should be much on the prosthetic space and planning. Right. On the other side, we are doing a full mouth implant case where we're going to be taking the impressions on a full arch prosthetics. So do you have to say anything to the clinicians of watching this video? The general dentist, the perio guys, the surgeons, anything for them? For them, that it's always good to focus on your weak areas, and if implantology is, I mean, they say that root canals are the bread and butter of dentistry. I think implantology is the entire buffet. So if you want to really enjoy the buffet, you need to practice yourself, prepare yourself so that you get really good dish and you enjoy the buffet. Thanks.